Bonjour les étudiants, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, nous ferons la grammaire de la leçon 2. Compro? If you find any difficulty, I'll repeat in English as well. Good morning, students. How are you? You all are good. Today, we are going to do the grammar of lesson number 2. Understood? Okay, so shall we begin? So children, we have already done the passage comprehension of lesson number 2, and I have told you the question answers as well. Today we are starting the grammar portion. We are taking 2 portions, okay? Plural of nouns, number 1, pluriel de noms. This we have already discussed last year, children, okay? When and how we create singular noun to plural nouns, okay? So just a very simple thing. Some points are given here. I have written in a piece of paper, like in my register, so I will be sharing this page to you, okay, in your WhatsApp group. So what you have to do, just write down as it is in your French notebooks, okay? So there are total 5 points, children, okay? I'll explain you from the book, then you will write down by using this register, okay? So in the book, first point is there. Plural of nouns has been discussed in the part 1, okay? We had another book, so I told you in that also, okay? Most nouns are made plural by adding s to a singular noun, okay? What does it mean? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी वर्ड के लास्ट में एस एंड ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, जस्ट लाइक इंग्लिश, ओके? फॉर एग्जाम्पल, लू और गासो will become ले and they gaso, and please do remember that articles will also get changed, okay? Similarly, lu bobo, le de bobo, okay? Next one, what is bobo? Bobo sweets, okay? Next one, nouns ending with s, x and z in a singular form do not change in the plural. This also I told you that अगर कोई word already s, x या फिर z पे end हो रहा है तो plural करते टाइम हम उसमें कोई भी change नहीं करेंगे. It will remain as it is, only the article will get changed, okay? So lu or fi will become le or de fi. La o yun crua will become le and they crua, okay? Similarly, ne is nose. Same rule applies here as well. Third point, nouns ending with eau and eu normally take an x in the plural, okay? This also I told you जब मैंने आपको बताया था bo, beau will become beau x, okay? And gato will become gato with x, okay? Similarly, lo means water, x, fo is fire, okay? Like this. Children, जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, जिनके वर्ड्स हमें नहीं पता, मीनिंग नहीं पता, आप इस बुक में पीछे पेज यहाँ पे देखेंगे, पेज नंबर 28 में द मीनिंग्स ऑलरेडी गिवन. सो इसमें से हम मीनिंग सर्च कर सकते हैं, ओके? सो डोंट वरी. नेक्स्ट वन, certain nouns ending with ou, okay? One more thing, that some exceptional cases are also there with eau and eu, okay? Like this, un pont, le de pont, un livre bleu will become bleu only with s. इसमें हम x नहीं लगाएंगे, इसमें s लगेगा, okay? कुछ exceptional cases हैं. Now here जो words ou पे end हो रहे हैं उनके बाद में भी x लगता है. For example, bijou, जेनू आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेसन में, इट्स नी, ओके? सो इट्स एक्स. देन हिबू, शू, हिबू जूजू, पू, हिबू इज आउल, ओके? एक्स ये देखेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, कू और क्लू. कू क्या होता है? नेक, या? सो यहाँ पे एस लगेगा. Fine, so this is exceptional. Most of the nouns ending with al, aux in the plural, it will take aux in the plural. So journal, signal, shovel, these all will take aux, okay?
यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है, यहाँ पे इन वर्ड्स के आगे एस लगेगा, ये हमें लर्न करने पड़ेंगे. ओके, एंड यू विल फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग्स हियर. यहाँ देखिए, बीजू मतलब ज्वेल होता है, फाइन. ये सब हम, कू मतलब नेक होता है. ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं. जूजू इज़ टॉय, फाइन. सो this is the rule. Now similarly I have made in your copy. Okay, so I have written these words, plural they nouns, first one, second one, third one, fourth one and fifth one, and the exceptional cases I have told you in at the last 3 points. Okay, so just have a look और इसी way में आप लिखेंगे. Next, okay, next we are going to do the second verb of group of verb. I told you in the, I think in the beginning, starting में जब हम ER ending verb कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो verbs हैं वो कितने तरह के होते हैं. verbs होते हैं 3 तरह की. लेसन नंबर 1 पेज नंबर 18 में हमने आपको बताया था that ER ending, IR ending and RA ending 3 type of verbs होते हैं. ER ending we have already learned and I hope you all learn the conjugation that we remove last ER, then we put E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Okay, similarly today we are going to do the second group, IR ending verb. Okay, those verb who ends with IR, उनका कैसे कॉन्जुगेशन करना है. ओके, सो दिस इज़ अ सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ब्स, IR वर्ब्स, एंड दैट टू रेगुलर IR एंडिंग वर्ब्स. IR एंडिंग को भी 2 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं, IR एंडिंग रेगुलर एंड IR एंडिंग इरेगुलर. सो टुडे वी आर डूइंग द रेगुलर वर्ब्स. ओके, सो व्हाट इज़ द रूल? द रूल इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द वर्ब यू हैव टू रिमूव ओनली R. We will only remove R. We will not remove IR. We will remove R. And R remove करने के बाद हम कैसे लगाएंगे? S, S, T, S, S, O, N, S, 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 E, Z, S, S, E, N, T to the radical of the verb. For example, we have taken verb finir. Finir means finish. Okay, so radical portion is fini and termination will be R. जो हम terminate कर रहे हैं वो क्या है? R. अब इसका conjugation हमने क्या किया? मैंने इसको रजिस्टर में लिखा है, बहुत अच्छे से आपको ईजिली समझ में आएगा. ये देखिए, the present tense of IR ending is conjugated by removing the R and adding S, ST, SSONS, SSEZ, SSENT according to these pronouns. Okay, here I have given the first one. य पहले हमने क्या कर दिया, सबके फिनी लिख लिए, राडिकल पोर्शन लिख लिया. उसके बाद हम क्या लगाएंगे? य के साथ भी पुट S, त्यू के साथ S, इल T, नू SSONS, who, SSEZ and ILS, ELLES, LIL, SSENT. So the pronunciation will be fini, 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 finisson, finisse, finis, finis. Okay, this is to finish. Now there are some words given here. Okay, these all verbs conjugate in the same manner as finir conjugate. Okay, see this one. Total 15 words are there. Some has given at the back of your book also. Okay, so finir, choisir is to choose, rougir is to redden and to blush, ugir is to succeed, demolir is to demolish, grandir is to increase in size, blanchir is to bleach and whitewash, remplir is to fill, punir is to punish, obrir is to obey, grossir is to grow bigger or larger, maigrir is to become thin, batir is to build, reunir is to reunite, accomplir to accomplish. These all verbs conjugate as finir. Okay, इन सभी verbs को हम इसी की तरह conjugate करेंगे. So what you have to do, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ. यहाँ पे आप एक होमवर्क लिखेंगे, क्वेश्चन conjugate choisir, rougir and accomplir. ओके, क्या क्या कॉन्जुगेट करेंगे हम? choisir, rougir and accomplir. This one and
this one, second, third and 15th one same as veneer. Fine. So this you will do. I hope आपको समझ में आ गया होगा. मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको that at the back of your this book ना, यहाँ पे हम देखेंगे verbs. See page number 126 is 126. Okay, some verbs given, these are exceptional er etre and awar, then er ending verbs given, then this is veneer verb. Okay, veneer verb के ये भी जो verbs हैं ये veneer verb की तरह होते हैं. ठीक है, तो ये भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं. बाकी this you have to do in your copy today. Tomorrow we are going to do the exercise of this book. Okay, page number 30, 31 and 32. Fine. So tomorrow we will do the exercise. Today please children finish this work, because अगर आज आप ये नहीं करेंगे तो कल exercise आपको नहीं बनेगी. Most of the exercise are based on IR ending verb and the plural form we have learned today. Fine. कोई difficulty हो please call me. I am not getting any calls from you. What does it mean? क्या मैं समझूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? So please children call me, or you can WhatsApp me as well. In my personal WhatsApp window you can ask the questions. You are most welcome. Okay, so please finish your work today. Abhiyanto, see you tomorrow. Adama. Okay, so bye bye. Au revoir.